We also take immense pleasure in welcoming Honorable Mr. Justice Suryakant, the Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India, Honorable Judges of the Supreme Court of the Dais, Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State of Law and Justice, Honorable Chief Justices and Judges of Bhutan, Kenya, Mauritius, Sri Lanka, Malaysia, and Nepal, Shri Anil Kumar Sinha, former Judge, Supreme Court of Nepal, and presently Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal, former Chief Justices of India, former Judges of the Supreme Court, Honorable Chief Justice, Delhi High Court, Honorable Judges of Delhi High Court, Shri R. Venkatramani, Attorney General for India, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India, Shri Vikas Singh, President, Supreme Court Bar Association, senior advocates, and other distinguished members of the bar, esteemed guests, ladies and gentlemen. Constitution Day is not just a commemoration, it is a call to our responsibility, reminding us that the true power of the Constitution lies in its faithful implementation and in our collective commitment to its vision. I invite Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India, to kindly deliver the welcome address. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, Honorable Chief Justice of India, Justice Suryakant, my esteemed colleagues, Minister of State Independent Charge for Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, Learned Attorney General for India, Shri R. Venkatramani, Learned Solicitor General of India, Shri Tushar Mehta, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman Bar Council of India, Shri Vikas Singh, President Supreme Court Bar Association, Shri Vipin Nair, Chairman, President SCORA, former Chief Justices of India, retired judges, learned senior advocates, members of the bar, distinguished guests, ladies and gentlemen, and all foreign dignitaries who are here. It is my privilege to extend a warm and respectful welcome to each one of you on this solemn and celebratory occasion of Constitution Day 2025. We are deeply honored by the gracious presence of the Honorable President of India, whose august office reminds us of the democratic ideals and constitutional values that guide our republic. Her life journey itself stands as a testament to her remarkable character. Born in the remote district of Mayurbhanj in Odisha, she rose from simple and humble beginnings through sheer perseverance and an unwavering sense of duty. Her decades of service, especially her tireless work for the health, education, and economic empowerment of tribal communities, and her commitment to preserving their culture and heritage, have made her an enduring symbol of compassion, resilience, and inclusive leadership. We take great honor in welcoming the Honorable Chief Justice of India, Justice Suryakant, whose leadership, grounded in institutional integrity, accessibility, and efficiency, will, we are confident, continue to guide and strengthen the judiciary. We also warmly welcome the Minister of State for Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, whose efforts in steering legal reforms and fostering dialogue between the bar, the bench, and the government contribute significantly to the justice delivery system. Today, we gather to commemorate a moment of extraordinary vision in our national life, 26th November 1949, when the Constituent Assembly adopted the Constitution of India. In that historic act, a diverse, newly independent nation chose democracy, liberty, equality, and faith in the rule of law as the guiding light of its future. Our Constitution is not merely a legal document, it is a living promise. It is the framework within which India has pursued justice, nurtured pluralism, and ensured that every citizen has both rights and responsibilities. Constitution Day is therefore not a ritual. It is a reaffirmation of the shared values that bind us, the dignity of the individual, the unity of the nation, and the hope that democratic institutions will continually evolve for the better. In a nation as vast and varied as ours, the Constitution acts as both compass and anchor. It provides stability to institutions and protection to the weakest among us.
even as it adapts to new demands and new generations without losing sight of its foundational values. As the Supreme Court of India, we remain anchored in the Constitution. Our interpretive task is approached with humility and care, aware that its meaning shapes the everyday realities of millions. I once again extend a heartfelt welcome to the Honorable President of India and to all distinguished guests present here today. May this occasion inspire us to deepen our commitment to constitutional morality and strengthen the spirit of democratic citizenship. Thank you. Thank you, Lordship, for your inspiring words. In order to express our heartfelt gratitude to our worthy Chief Guest, may I request Honorable Mr. Justice Suryakant, the Chief Justice of India, to kindly present a memento to Honorable the President of India, Shrimati Droupadi Murmu ji, depicting the world-famous Mysore rosewood inlay work form. I invite Shri Vikas Singh, President, Supreme Court Bar Association, to deliver his address. Honorable President of India, Shrimati Droupadi Murmu, Justice Suryakant, Honorable Chief Justice of India, Justice Vikram Nath, Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable Judges of and Chief Justice of various courts visiting countries which are present here today, Learned Attorney General for India, the Solicitor General for India, Honorable Minister for Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Justice B.R. Gawai, Justice J.S. Keher, Justice Ramanna, and Justice V.N. Khare, former Chief Justice of India, present here today. 79 years ago, the Constituent Assembly embarked on a transformative journey, weaving the diverse threads of our nation into a manifesto of hope. Amongst the architects was Srimati Hansa Jivraj Mehta, a pioneering feminist whose voice cut through the clamor for genuine inclusion. On December 19, 1946, during debates on the objective resolution, she declared, "It will warm the hearts of many a woman to know that free India will mean not only equality of status, but equality of opportunity. It is true that few women in the past and even today enjoy highest status and have received the highest honor that any man can receive, like our French Mrs. Sarojini Naidu. But these women are few and far between. One swallow does not make a summer. These women do not give us the real picture of the position of Indian women in our country. Women now constitute almost 48% of India's population and hold pivotal roles in every walk of life, barring politics and law. In politics, although a forward-looking step has been taken by the introduction of reservation for women, however, its implementation for some unexplained reason has been deferred. Yet, as Ms. Mehta warned, isolated triumphs do not herald progress. Her words remind us that equality is not achieved by symbols, by structure that endure. Currently, only 1 out of the 33 judges of the Supreme Court is a woman. Women comprise approximately 13% of the High Court judges and 35% of the District Court. By 2030, we must set measurable goals to ensure representation of at least 25% women judges in Supreme Court, 30% in the High Court, and 50% in the District Court. Pertinently, the strength of the judicial system rests entirely on the public trust it commands. The trust is built through equality and character of men and women elevated to the bench. Despite the Supreme Court's 2016 judgment laying down clear parameters of eligibility, transparency, and accountability for revising the memorandum of procedure, the pressing need to implement it remains unmet nearly a decade later. Indeed, such implementation is not merely desirable, but indispensable, for it is the only way accountability can be meaningfully infused into the collegium system. Supreme Court Bar Association recently had organized a marathon with the slogan Justice for All. Justice for all is not merely a slogan, it's the heartbeat of our republic. It means justice for the poor who seek dignity, justice for women who demand equality, justice for minorities who deserve protection,
justice for future generations who inherit our choices, justice for the environment which sustains our collective future. This is the unfinished agenda of our democracy, and it is our solemn duty to fulfill it. Our constitution is a document of extraordinary foresight. If all organs of the state and every citizen were to faithfully follow its guiding principles, most of our problems would find resolution. Directive principles of state policy enjoins the state to promote the welfare of the people and to secure a social order based on justice, fundamental duties, reminds us it is not just enough to demand accountability from the government. We too are morally obligated to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to safeguard public property and to protect and improve the environment. The genius of our constitution lies in this dual responsibility. It keeps government accountable and it keeps us, the people, ethically bound. True justice must also heal relationships. The cause of justice is best served by consensus and conciliation, not just by winning or losing, but by meaningful give and take. Even if all pending cases are adjudicated today, only half the litigants would feel that they received justice. The other half would still feel that justice was denied to them. It is noteworthy that resolution achieved through mediation or lok adalat attain finality, unlike other options of dispute resolution. Lastly, the quality of our lawmakers is a serious concern. We must work diligently towards decriminalizing politics and reducing the influence of black money in elections, as the two are closely interlinked. Parliament and the Election Commission need to proactively take steps to curb both. By doing this, we will be able to ensure that the dream of Dr. Ambedkar of ensuring that only persons of high caliber and integrity enter the legislatures of our country is fulfilled. Let us rekindle the vigor so that all organs of the government, with active participation of the bar, take actionable steps and hold themselves accountable on this every Constitution Day and so. Then. Thank you, sir, for sharing your thoughtful words. I invite Shri Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India, to deliver his address. Honorable Srimati Droupadi Murmu ji, the President of India, Honorable the Chief Justice of India, Sri Surjkant ji, Honorable Sri Arjun Ram Meghwal ji, the Union Minister for Law and Justice, Honorable Mr. Justice Vikram Nath ji, Judge Supreme Court of India, Honorable Judges of Supreme Court of India and Chief Justice of Delhi High Court, Honorable former Chief Justices of India, former Judges of Supreme Court, Honorable Attorney General for India, Sri R. Venkataraman ji, the Solicitor General of India, Sri Tushar Mehta ji, Honorable dignitaries and guests from foreign countries, Mr. Vikas Singh, President, Supreme Court Bar Association, my dear colleagues, officers, staff of Supreme Court, ladies, gentlemen, and media people. It is a historical fact that lawyers led India's movement for liberty. Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Patel, Rajendra Prasad, our foremost freedom fighters, architects of modern India, and constitutional thinkers were products of bar. When the Constituent Assembly convened, nearly 1/3 of its members were lawyers. But the bar's role did not end with the constitution making. In many ways, it truly began afterwards. Post 1950, the Indian bar became the defender, interpreter, and sometimes the conscience keeper of the Constitution. Our courts became arenas where lawyers expanded the meaning of liberty, equality, and justice. Even outside the courtroom, the bar contributes the constitutional development by educating citizens, safeguarding institutional integrity, and continuously reminding the state that the power must remain accountable. The story of Indian Constitution cannot be told without acknowledging the role of Indian bar. Ours is a constitution that recognized diversity, yet created unity. India is a constitutional miracle. A nation with over 140 crore people, 22 scheduled languages, thousands of dialects, multiple religions and cultures, uneven geography, and deep social and economic cleavages. Friends, as lawyers, we often say the Constitution protects
not just the powerful, but especially the powerless. India's judiciary has played an extraordinary role in ensuring the Constitution works for everyone. In each of its decisions, the Supreme Court has made one thing clear: no citizen is invisible in the eyes of the Constitution. Our Constitution is a flexible, evolving, and responsive living document. Sirs, let me state some harsh realities to Honorable the Union Minister for Law and Justice. There are two classes of lawyers. There is a vast majority of lawyers from middle-class families. Getting briefs is a dream for them, and it is very difficult for them to get suitable senior officers. Arbitration and now mediation are emerging as the vital pillars of dispute resolution. However, participation is limited to certain class. Arbitration work has almost been pocketed by few big law firms, and now serious attempts are being made to pocket the mediation also by some big giants. Same is the case with government panels. Honorable Law Minister and the Union government will have to think about it seriously and evolve some mechanisms where every needy and deserving advocate could get the work opportunities. Fluency in English should not become an unintended barrier to talent. A lawyer's merit is judged by legal understanding and advocacy skills. Our Honorable Chief Justice of India and our judges always try to ensure that every deserving lawyer, regardless of background, gets a space to grow. But my request is that after 75 years of independence, regional languages should get proper respect in all courts of law, right from Supreme Court to Talika courts. Indian Bar is thankful to our Honorable Chief Justice of India for empowering the women lawyers. Reservation in Supreme Court Bar Association by a bench presided over by Honorable Mr. Justice Surjkant is a landmark decision in the history of our nation. On his suggestion only, the Bar Council of India is also seriously thinking to reserve seats in bar councils for women from the next elections. Lastly, I'll conclude by saying that the Indian Constitution is not just a legal text. It is national conscience. It is a promise that every individual, irrespective of their identity, enjoys dignity, equality, and freedom. Thank you. Jai Bharat. Thank you, sir, for your insightful views. I invite Shri R. Venkat Ramani, Attorney General for India, to deliver his address. Thomas Jefferson, one of the architects of the US Constitution, is said to have said, a constitution should be ideally rewritten in every generation. But he did not know, sometime later in future, there is something called the Indian Constitution, which would be a great rebuff to this statement. Respected Sri Droupadi Murmu, Honorable President of India, Honorable Judge Surya Kant, Chief Justice of India, Honorable Vikram Nath, Judge Supreme Court of India, Honorable Chief Justices and judges from Bhutan, Kenya, Mauritius, Sri Lanka, Malaysia, and Nepal who are gracing the occasion. On behalf of the Indian Bar, I welcome them all, and I wish all their people great economic and social well-being. Esteemed former Chief Justices and judges of the Supreme Court of India, Chief Justice of Delhi High Court and Judge of Delhi High Court, Honorable Sri Arjun Ram Meghwal, Minister for Law and Justice, learned Solicitor General of India, Tushar Mehtaji, Sri Manan Kumar Mishra, Chairman Bar Council of India, Sri Vikas Singh, President Supreme Court Bar Association, all respected dignitaries assembled here. We celebrate many festivals with joy and warmth, lighting our homes, wearing new clothes, sharing sweets, and carrying forward traditions with devotion and affection. Each festival has its own meaning, its own sense of togetherness, and we value them for their cultural and spiritual resonance, which we pass on to the next generation. An air of celebration marks all of these occasions. Rightly, we have added to that list a festival that binds us as a nation, the celebration of our Constitution, a celebration beyond divisions,
beyond distinctions, a celebration that unites us as one people. This celebration is unlike any other. It calls for more than emotion. It demands a shared faith and trust in the Constitution, a fabric woven which sacrifices visions and ideals of millions of our sisters and brothers who believed in liberty and freedom for all. The more this fabric endures, the richer its value becomes. It's a celebration that demands of us a renewed commitment to work together for the welfare of all, to respect and honor all faiths, and to strengthen the democratic process that has secured so many gains for our common welfare. It calls upon us to ensure that our institutions function with integrity, purpose, and principle. It reminds us that securing liberty and welfare for every citizen is a collective duty and that our intellectual, social, economic resources must be devoted to the end. It places the nation first, its well-being, its unity, its journey. The Constitution was a made in India document, and everything we do today must similarly reflect that spirit, drawing upon our genius, creativity, and commitment to the welfare of all humanity, unlike the narrow, sectarian, or exploitative approaches seen in many parts of the world. 75 years of a constitutional journey is a great chronicle of wise and mature management of our polity. Over the decades, Supreme Court has enriched and expanded the meanings of the scope of the Constitution, equality in its social and political sense, freedom of speech and expression, executive accountability, and the central place of the Constitution in our national life. The pragmatic role of superior courts in national development is critical. The bar can neither be a sleeping partner nor a retarder. As we celebrate and move ahead with all our achievements in the social and economic field, in the field of education and gender empowerment in particular, in opening up all domains of our areas in technology and indigenous making of goods and products in health and hospital services, in the railway sector, in space exploration, and access to work and transaction in the digital world to ordinary women and men, we still need to address one important and pressing concern, namely ease and comfort in our justice delivery system. Our common commitment will be to ensure that we guarantee and practice dignity to the socially and economically deprived in all their interactions with the justice system, the police, the civil servants, and the courts. NALSA, which is doing wonderful service in expanding the space of legal services, may consider some thoughts on the above. Rule of law will become meaningful if we move from mere institutional independence and accountability into collective commitment to ease and comfort in navigating the justice and dispute resolution system. India is positioned well enough to become the global center of mediation and arbitration regimes. We stand today in a new age of freedoms and equality, a new age of technology, unlike all other earlier machine ages. And this has opened up challenges which are also new. But our Constitution and our governance systems are resilient enough to meet all these challenges. Through all this, the Constitution will continue to breathe life and strength into our institutions and into our collective journey. The source of this strength remains the same, we, the people of India. And the legal fraternity continues to be the backbone of that commitment. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your valuable words. I invite Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State for Law and Justice, to deliver his address. कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में मंच पर उपस्थित वे हम सभी को प्रेरणा दे रही नारी शक्ति की प्रतीक, सादगी व सौम्यता की प्रतिमूर्ति, भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। न्यायपालिका में नवाचारों के सूत्रधार, विजनरी एंड डायनेमिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस श्री सूर्यकांत जी, आदरणीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, लर्नेड अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकट रमणी जी,
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा जी, लर्नेड सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, न्यायमूर्ति श्री B.R. गवई साहब, and other ex-CGI and retired judges of Supreme Court, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के अन्य उपस्थित न्यायाधीशगण व विभिन्न देशों यथा भूटान, केन्या, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया से आए हुए सम्मानित मुख्य न्यायाधीश में वरिष्ठ न्यायाधीशगण तथा वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, लॉ स्टूडेंट एवं पत्रकार साथियों, आज विश्व के सबसे बड़े व सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत को पलवित व पोषित करने में एक मजबूत नींव की भूमिका निभाने वाले भारतीय संविधान को समर्पित इस दिवस में आप सभी के साथ शामिल होकर अत्यंत हर्ष व गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिवस संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए एक राष्ट्र के रूप में हमारे द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और उनके सशक्त विजन पर कृतज्ञतापूर्वक विचार करने का भी अवसर है। यह अवसर संविधान निर्माण के महान कार्य में महत्वपूर्ण निभाने वाले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने हुए सदस्यों, रियासतों व चीफ कमिश्नर प्रोविंस के प्रतिनिधियों के रूप में योगदान देने वाले सभी महानुभावों को श्रद्धापूर्वक नमन करने का भी क्षण है। हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रोड मैप है जो हमें समतामूलक, न्यायपूर्ण और विकसित समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के प्रावधान के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सुशासन की राह प्रशस्त करता है। विविधता से भरे हमारे देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार देकर नागरिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी का भी संविधान एहसास करवाता है। भारत का संविधान हमें अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाता है। यह सच्चाई है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र हमारी जड़ों में नीत है। संविधान उन्हीं मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है। आज के इस अवसर पर एक विषय पर ध्यान आकर्षित करना भी प्रासंगिक है। संविधान सभा में बहस के दौरान सेठ गोविंद दास ने भारत नाम के पक्ष में अपनी जोरदार दलीलें प्रस्तुत की थी और कहा कि यह देश के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। औपनिवेशिक प्रभाव का विरोध करते हुए उन्होंने भारत नाम के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए। आज भी ये विचार जन भावना के रूप में हमारे सबके बीच में जिंदा है। भारत में लोकतांत्रिक भावना मूल सभ्यता की शुरुआत से ही रची बसी है। भारतीय लोकतंत्र की उत्पत्ति व आदर्शों के साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, जनपदों के इतिहास, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बुद्धिज्म, जैनिज्म के कालखंड की अनेक परंपराओं से मिलता है। तमिलनाडु के उतिरापेरूर गांव के 1000 साल पुराने शिलालेख हो या भगवान बसवना के 12वीं सदी के अनुभव मंडप हो, ये सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से संवाद के उदाहरण व संवैधानिक इतिहास की सशक्त नींव है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की बहसों के दौरान इन तथ्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान का मूल आधार भारतीयता से ही लिया गया है। आज से 76 वर्ष पूर्व संविधान को अडॉप्ट करने की पूर्व संध्या पर 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मैं कोट करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे और जहां राजतंत्र भी थे वो या तो इलेक्टेड होते थे या लिमिटेड होते थे, वो कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते थे। अनकोट। 1954 में ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान भी बाबा साहब B.R. अंबेडकर जी ने कहा था कि पॉजिटिवली माय सोशल फिलॉसफी मे बी सेड टू बी
enshrined in three words: liberty, equality, and fraternity. Let no one, however, say that I have borrowed my philosophy from the French Revolution. I have not. उन्होंने जोर देके कहा, I have not. My philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived them from the teaching of my master, the Buddha. He gave the highest place to fraternity as the only real safeguard against the denial of liberty or equality or fraternity, which was another name for brotherhood, or humanity, which was again another name for religion. Unquote. आज जो संविधान हमें दिशा प्रदान कर रहा है, उसके निर्माण का पूरा श्रेय ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को कठिन मेहनत और दृढ़ शक्ति के कारण जाता है। अनेक विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने एक संतुलित व जीवंत संविधान भारत को प्रदान किया। उनके विषय में यह कहा जा सकता है, जमाना कहां वाकिफ है, जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से। इतनी हौसला रखते थे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में ये दो लाइनें हैं, जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस अवसर पर नागरिकों को पत्र लिखकर वर्ष 2047 तक विकसित और सशक्त भारत के निर्माण में कर्तव्य भावना को सर्वोपरि रखते हुए सार्थक भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की अवधारणा पर चलकर सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसपोर्ट के विजन को सार्थक क्रियान्वयन आज देश हर सेक्टर में महसूस कर रहा है। मैं इस अवसर पर गवर्नेंस के तीनों ऑर्गन्स यथा विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के मध्य दायित्वों का स्पष्ट विभाजन करके लोकतांत्रिक पहलुओं को यह हमारा संविधान पुष्ट करता है। इसी प्रकार केंद्र, राज्य व स्वशासी संस्थाओं के मध्य नीतिगत विषयों के स्पष्ट विभाजन व प्रभावशाली क्रियान्वयन का भी ये लोकतांत्रिक मॉडल पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। सरकार के तीनों ही अंगों, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को समन्वित प्रयास से ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण मनोयोग से अपना 100% योगदान देकर बिना थके, बिना रुके कार्य करना है। ये भाव मैं कुछ पंक्तियों से व्यक्त करना चाहता हूं। मुश्किलें जरूर है, कुछ लोग कहते हैं अभी तक यहां तक पहुंचे, अभी तक यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचे हैं हम। मुश्किलें जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, अभी पहुंचना है हमें। लास्ट में भारतीय संविधान को नमन करते हुए विकसित भारत के संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत के अद्भुत संविधान को सादर नमन हमारा है, जिसने भारत की जनता का जीवन रूप संवारा है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की हम सबको राह दिखाई है। अब विकसित राष्ट्र बनाने का भी दृढ़ संकल्प हमारा है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your profound remarks. To enrich this occasion with his sagacious thoughts, we have the honor of welcoming Honorable Mr. Justice Suryakant, the Chief Justice of India, to address this keen gathering. Honorable the President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, Justice Vikram Nath, Judge Supreme Court of India, and Executive Chairman, National Legal Service Authority, my esteemed sister and brother judges from the Supreme Court of India, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Minister of State for Law and Justice, distinguished Chief Justices and senior judges from the apex courts of Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Kenya, and Mauritius. We have former Judge of the Supreme Court of Nepal, Justice Anil Kumar Sinha, who is presently looking after the affairs of the country as a law minister. Justice V.N. Khare, Justice Kher, Justice Ramana, and Justice Bhushanram
Krishnan Gavai, Honorable the former Chief Justice of India, Honorable former Judges of the Supreme Court of India, Sri R. Venkatramani, Attorney General for India, Justice D.K. Upadhyay, Chief Justice Delhi High Court, and other judges from the High Court of Delhi, Sri Tushar Mehta, Learned Solicitor General of India, Learned Additional Solicitor General of India, Sri Manan Kumar Mishra, Chairman Bar Council of India, Sri Vikas Singh, Senior Advocate and President, Rahul Mishra, Vice President, Pragya Baghel, Secretary and other office bearers of the Supreme Court Bar Association, Sri Vipin Nair, President, Sri Anil Sharma, Vice President, and Sri Nikhil Jain, Secretary of the Supreme Court Advocates on Record Association, Secretary General, Registrars, and other officers of the Supreme Court, distinguished senior advocates, members of the Supreme Court Bar Association, registrars, and other officers from the visiting friendly nations, dear law students, ladies and gentlemen, Namaskar. It is my proud privilege and profound pleasure to stand before this distinguished and illustrious gathering as we commemorate 76 years of our venerated Constitution coming into force. Allow me to commence on a resonant and evocative note by recalling the wisdom of Begum Ezaz Rasool, who was one of the 15 women members of the Constituent Assembly and an everlasting source of inspiration, and one of the distinguished women whose contribution enriched the deliberations of our Constituent Assembly. She said, and I quote, "A constitution is judged by the spirit in which it is worked. It is judged by the manner and method of its implementation. I hope and pray," this is what she said, "that the implementation of this constitution will be such as to enhance the prestige of our motherland and make her a dynamic force that will bring together all nations of the world within the orbit of an enduring peace." Though decades have passed, this powerful statement echoes with undiminished force. It reveals how the framers envisaged a constitution both supple enough to adapt to changing realities and visionary enough to position India not only as a thriving nation, but also as a moral and constitutional compass for the world. This expression has, in many respects, proved remarkably prescient. Our Constitution has guided us from the uncertain steps of a young nation finding its footing to the confident stride of a country now counted among the world's largest economies and regarded as a force of consequence. Over these 76 years, industries have taken shape, policies have matured, economic architecture has been carefully constructed, legislative and regulatory framework have evolved with remarkable sophistication, and technology has advanced a breathtaking pace. Yet, through all this transformation, one constant has anchored our progress, and that is the Constitution has remained our enduring grundnorm, the stabilizing force that has allowed change without chaos and growth without drift. A central reason for this abiding ability has been the judiciary's unwavering dedication to reading the Constitution in harmony with evolving realities, consistently upholding its duty as the Constitution's vigilant guardian. In the decades since our Constitution came into force, the judiciary has continuously evolved and breathed life into the words inscribed in it, guided by the single-minded objective of ensuring that justice eludes no one. Over these years, we have expanded the contours of Article 21, infused renewed meaning into the fundamental duties and the directive principle of state policy, and enabled public-spirited
and aggrieved individuals to approach constitutional courts directly for the vindication of their rights. However, I am not suggesting that our challenges have been exhausted or that our aspirations have reached their limit. As the old adage reminds us, when one climbs a mighty mountain, one discovers only higher peaks still to be scaled. As we mark 76 years of our Constitution's existence, it is imperative that we reinvigorate our pursuit of the constitutional promise of access to justice, which is a foundation upon which all other rights rest. Without such access, liberties become ornamental, and constitutional guarantees lose their resonance in the lives of ordinary people. This commitment is embedded at the very core of our constitutional design through Articles 32 and 39A, which make access to justice both explicit and indispensable. Our framers recognized that a constitution which proclaims rights without providing avenues to enforce them may not be a true testament of justice. It is for this reason that Article 32 has been described as the heart and soul of the Constitution, and why the duty to safeguard access to justice rests squarely upon the Supreme Court and High Courts as guardians of the constitutional order. It is against this constitutional backdrop that we must consider what is required to give this guarantee meaningful effect. If access to justice is our moral and constitutional North Star, then predictability, affordability, and timeliness form its core supports. Despite that, when we look closely at the functioning of our justice delivery system, there is still a disquieting gap between the constitutional vision and the experiences of many, particularly those on the margins for whom the ideals of access to justice remains elusive due to exorbitant cost, language, distance, and delay. These barriers weaken the very overarching goal we seek to protect, and in doing so, magnify existing inequalities. I believe that veritably realizing the precept of access to justice is an act of constitutional fidelity, and the first step in that direction must be through the augmentation of judicial infrastructure in aid of effective justice delivery. By judicial infrastructure, I speak not only of physical infrastructure or facilities, but also of the technological, administrative, and human systems that enable justice to function. This infrastructure is the bedrock on which meaningful reform rests and forms an indispensable element of constitutional performance. While the judiciary remains the sentinel of the Constitution, we must acknowledge that the justice system extends beyond formal adjudication. It requires a constellation of complementary pathways that are accessible, credible, and firmly anchored in the constitutional values. In particular, I wish to underscore that one of the most transformative developments in contemporary jurisprudence has been the emergence of mediation as a central pillar of our justice delivery system. Mediation opens pathways not through adversarial triumph, but through cooperative resolution. It is cost effective, participatory, and deeply human. When supported by well designed mediation centers, trained professionals, structured procedures, and robust digital platforms, mediation has the potential to reshape our dispute resolution culture. It can easily take care of dependency, enhance public confidence, and repair relationships in ways that litigation seldom permits. Above all, it brings justice closer to the people by offering a process that is less intimidating,
more efficient, and genuinely responsive to individual needs. I take great pride in noting that the recently organized Mediation for Nation drive has garnered substantial step in promoting mediation as a lucrative and expeditious means of resolving pending matrimonial, motor accident, and commercial disputes. As part of this initiative, we have also developed a comprehensive 40 plus hour online mediation training module to equip participants with the requisite skills, thereby enabling them to meaningfully contribute to this evolving vision. Alongside mediation stands the broader architecture of arbitration and other forms of alternative dispute resolution. Institutionalized arbitration has the capacity to transform not only domestic disputes resolution but also India's global legal standing. We have established world class arbitration centers, embraced international best practices, and ensured consistent judicial support for arbitral autonomy. India is thus steadily positioning itself as a preferred destination for international dispute resolution. This synergy among courts, ADR, and mediation is, in my view, where India's judicial future truly lies, and technology is the connective tissue that binds this vision together. Digital filing, virtual hearings, online transcript software, multilingual platforms, and modern case management tools have already begun to democratize access to justice. Nevertheless, technology must still be deployed with sensitivity and should remain inclusive, particularly for those who lack resources or connectivity. When I speak of harnessing technology within the judicial system, it is equally essential to recognize the role of international cooperation in shaping both our technological and institutional progress. As the Indian judiciary has successfully employed technology as a part of ongoing efforts to advance the goal of providing access to justice for all, we remain committed to sharing our practices and expertise with friendly nations. It is my conviction that the Committee of Courts should no longer be regarded as an abstract diplomatic ideal. It must be understood as a practical conduit for shared learning, mutual strengthening, and collective advancement. Ultimately, the constitutional promise of access to justice cannot be achieved through one measure alone. It is fulfilled by a justice system working in concert, anchored in resilient infrastructure, enriched by technology, expanded through institutionalized ADR, and led by a judiciary steadfast in its constitutional mandate. The time is also ripe for us to reinforce predictability in our judicial approach. One constructive way forward, in my opinion, can be the evolution of a uniform national judicial policy, an institutional framework that encourages coherence across jurisdictions so that our courts speak with clarity and inconsistency. It is high time we minimize unpredictability and avoidable divergence that may arise simply because there are 25 high courts or multiple benches in the Supreme Court. Justice cannot resemble a set of instruments producing harmonious notes in isolation, but discordant sounds when played together. Instead, we must strive for a judicial symphony, one rhythm expressed in many voices and languages, but guided by a common constitutional score. On this historical day, we are reminded that the Constitution is not self-executing. It lives through our institutions, our citizens, and our collective determination to refine, rethink, and rebuild. As I quoted earlier, I am reminded that the framers entrusted us with a document of extraordinary breadth and imagination, believing that future generations would build a vibrant India
capable of standing as a formidable presence on the global stage. Let us honor that trust. Let us continue to work of building a justice system that resonates with every individual who seeks its protection and remains faithful to the principles enshrined in our Constitution. Let us reaffirm that the Constitution gives us the strength to maintain democracy and proclamation of rights, and not only it also gives us the capacity to secure such rights. Thank you very much for giving this opportunity. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your encouraging address. May I request Honorable the Chief Justice of India to release the annual report of the Indian judiciary for the year 2024-2025 and present the first copy to our distinguished chief guest, the Honorable President of India, Shrimati Droupadi Murmu ji. The video depicting the video depicting the year-long activities of Indian judiciary is being played in the background for your reference, please. I request the IT team to play the video. The Annual Report 2024-25 presents a panoramic account of the Indian judiciary's performance and initiatives during the judicial year. It highlights how our courts are evolving through better processes, stronger technology, and greater accessibility, while staying true to the core values of independence, fairness, and justice. The report comes in two volumes. Digital reforms, research initiatives, legal services, and a separate chapter on the newly introduced National Judicial Museum and Archive. For the first time, it also includes suo motu disclosures under the Right to Information Act, reinforcing transparency and public trust. Volume 2 turns to the High Courts and select district judiciaries, documenting their achievements, innovations, and administrative progress across the country. It highlights the crucial role they play as the foundation of justice delivery. The digital versions of both volumes will be available under the Annual Reports section of the Supreme Court of India's website. And for the first time, the 2024-25 report will also be released as an audiobook, furthering our commitment to accessibility. We are thankful to Honorable the Chief Justice of India for releasing the report. स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की आधारशिला पर निर्मित हमारा संविधान सामाजिक समरसता तथा न्याय का मूल स्रोत है। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति महोदया का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सहजता, सरलता और सादगी की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। इस समारोह में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश विक्रमनाथ जी, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन मेघवाल जी,
भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी जी, भारत के बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा जी, उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए पूर्वतन मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश गण, अन्य प्रतिभागियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की अद्वितीय सफलता पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आज के दिन मैं उन संविधान निर्माताओं को सादर नमन करती हूँ जिन्होंने विश्व इतिहास के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े लिखित संविधान को स्वरूप दिया। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ने संविधान के आदर्शों का पालन और मर्यादाओं का निर्वहन किया है। इसके लिए मैं इन तीनों स्तंभों से जुड़े लोगों को सराहना करती हूँ। संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय सहयोग के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में उनकी 125वीं जयंती के वर्ष में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने केवल वंचित वर्गों के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र स्वरूप और विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया। संविधान सभा में उनके गंभीर वक्तव्यों से उनका बहुआयामी योगदान स्पष्ट होता है। बाबा साहेब की तरह ही संविधान सभा की सदस्य श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन समाज के उस वर्ग से आती थी जिसे तब दलित वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। उन्होंने भी वंचित वर्गों तथा महिलाओं के लिए आवाज उठाने के साथ साथ पूरे समाज और देश के नवनिर्माण की दृष्टि से कार्य किया। संविधान सभा में अपने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था, संविधान सभा केवल संविधान ही नहीं बनाती है, बल्कि लोगों को जीवन की नई रूपरेखा भी प्रदान करती है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान सभा के सुविज्ञ महिला और पुरुष सदस्यों अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को बहुत व्यापक परिदृश्य में देख रहे हैं। उनकी व्यापक दूरदृष्टि का लाभ हम सबको मिल रहा है तथा भारत की भावी पीढ़ियों भी लाभान्वित होते रहेंगे। हमारा संविधान हमारी जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था का गतिशील आधार ग्रंथ है। संविधान निर्माताओं ने संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए समुचित प्रक्रिया का प्रावधान भी किया था। इस संविधान के आधार पर बदलते संदर्भों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को परिभाषित किया जाता रहा। आप तो हुए 106 संविधान संशोधन में नवीनतम संशोधन के द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा सामाजिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये अधिनियम संविधान सभा की उन 15 महिला सदस्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है, जिन्होंने हमारी संसदीय प्रणाली में महिला सशक्तिकरण का सूत्रपात किया था। लेकिन आज भी हम लोगों का कदम पीछे है, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। आज बहुत सारे वक्ता ने महिलाओं के न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने का जो संख्या को और भी बढ़ाना चाहिए। इसीलिए केवल जनता प्रयास करने से नहीं होगा, हम लोगों को मानसिकता, माइंडसेट को भी बदलना होगा।
संविधान सभा से लेकर आज की संसद तक महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अन्य पिछड़े एवं वंचित वर्ग के प्रतिनिधि सामाजिक न्याय के आदर्श की दिशा में देश को आगे बढ़ाते रहे। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से जुड़े अध्याय हमारे संविधान की समावेशी और परिवर्तनकारी क्षमता के उल्लेखनीय उदाहरण है। संविधान के अनुरूप हमारे संवैधानिक संस्थानों में लोकतंत्र के विभिन्न स्तर सुनाई देती है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था की बहुत बड़ी सफलता है। देवियों और स्वजनों, ये हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि हमारे देश की सामान्य जनता से लेकर विशेषज्ञों तक संविधान में सबकी आस्था दृढ़ से दृढ़ तक होती गई है। इस विषय पर संविधान में क्या कहा गया है? इस प्रश्नों का उत्तर किसी कार्य अथवा व्यवस्था के उचित होने की कसौटी बन गया है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान के मूल्यों के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करना हमारे राष्ट्रीय धर्म है। मेरे पिता कहा करते थे, पता नहीं तुम क्या करोगे, क्या बनोगे, जो भी बनोगी, जब आगे बढ़ोगी बीच बीच में पीछे मुड़कर देख, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जो पीछे देखोगी, तुम देखोगी तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग पीछे रहे हैं। आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है, पीछे रहने वालों को आगे बढ़ाना बहादुरी है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, जो तो धर्मस्थ तो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। इस आदर्श वाक्य का हमारे महान लोकतंत्र के संदर्भ में भावार्थ है, जहां संवैधानिक मूल्य है वही विजय है। संवैधानिक मूल्यों के निर्वहन करने को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की संज्ञा दी थी। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ही संविधान सभा में विमर्श किया और अनुच्छेदों को अंतिम स्वरूप दिया। गंभीर चुनौतियों के बीच देश की एकता को स्थायी संवैधानिक आधार प्रदान करना हमारे संविधान निर्माताओं की प्राथमिकता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ संविधान के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण में जन सामान्यों की भागीदारी से हमारी लोकतंत्र के आधार ग्रंथ के प्रति लोगों से और अधिक आस्था बनी। जैसे कि सभी जानते हैं, वर्ष 1949 में आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे संविधान को अपनाया और 24 साल के बाद हम संविधान दिवस के 100 साल मनाएंगे। अभी शायद 76 ईयर हुआ। हमें पीछे मुड़कर देखें, हम कितने आगे बढ़े हैं और कितने लोगों तक संविधान में लिखा हुआ इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो भी लिखा हुआ उन तक हम सब पहुंचाए। यदि नहीं पहुंचाए, 24 साल में पहुंचा पाएंगे? वो एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सबके लिए, केवल न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के लिए नहीं, हम सब जनता के लिए भी। इसीलिए आज से 24 साल के लिए
100 साल मनाने के लिए केवल उत्सव मनाना बहुत सहज होता है। कुछ लोगों को बुलाओ, मना लो, लेकिन उत्सव किसके लिए? उत्सव किन के लिए? हम किन पद पे हैं? हम उस लायक बने? उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सामान्य जनता की गहरी रुचि को रेखांकित किया था। आपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की बैठकों के दौरान 53,000 लोगों ने विजिटर्स गैलरी से चर्चाएं को सुना। आज विजिटर्स गैलरी में कितने लोग हैं? हम लोगों के भाषण को सुनने के लिए केवल टीवी और मोबाइल ही जरिया है, लेकिन हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने लोग हम लोगों के भाषण को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। संविधान सभा की बैठकें 11 सत्रों में संपन्न हुई थी। उनमें हो रही चर्चाओं पर समाचार पत्रों में विस्तृत विवरणी और वाद विवाद छपते थे। जनता से भी राय मांगी गई थी। लोगों ने सुझाव के हजारों पत्र भेजे गए थे। संविधान सभा में देश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि विद्यमान थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समावेश और जन भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मीडिएशन व्यवस्था में मीडिएशन प्रक्रिया को शुरू किया गया है, एक बहुत बड़ा पदक्षेप है। क्योंकि देश जो आजाद नहीं हुआ था वही तो काम कर रहा था। कितने लोग कोर्ट कचहरी आते थे, गांव में ही सब समाधान हो जाता, क्योंकि माइंडसेट ऐसे था। हम उसी माइंडसेट को लाना पड़ेगा जनता को, क्योंकि कम से कम केसेस कोर्ट आए, लेकिन यहाँ एडवोकेट जजेज लोग मुझे गाली करेंगे, कम केसेस आएंगे तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? हम चाहे जस्टिस टू ऑल। जस्टिस टू ऑल मीन्स डोर स्टेप में हर चीज किया जाता है, डोर स्टेप में हर चीज दिया जाता है, पानी ये वो, तो ये भी डोर स्टेप हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को तैयार 1.4 बिलियन लोग, इतने लोगों को कोर्ट में लाना, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं। गांव में जाओ, बैठो, फैसला करो, क्योंकि ये संभव है, ये संभव है, हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं गांव में थी, उस पर क्योंकि राजघराना का प्रथा और ये अंग्रेजों का प्रथा था, दरबार, हम दरबार में जा रहे हैं। मेरे पिताजी कहते मैं तेरा दरबार में जा रहा हूँ। दरबार में क्या करते? मैं भी जाऊं, देखूं? नहीं, वहां लेडीज नहीं जाते, बेटियां नहीं जाते, वहां बहुत सारे के डिस्कशन होता है। लेकिन आज ऐसे नहीं है, हर चीज डिस्कस कर सकते हैं, हर कोई भाग ले सकते हैं, अखाड़ा में बैठ सकते हैं और उसको समाधान कर सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष, एक शांति प्रिय देश, हम शांति चाहते हैं, शांति से हम करना चाहते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी चीजें हम निष्पादन कर सकते हैं। एक लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट होने के बावजूद जन भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व के बल पर हमारा संविधान जनता का संदर्भ ग्रंथ बना गया। आने वाली पीढ़ियां संविधान के साथ जुड़ाव महसूस करते रहें, इसके लिए बच्चों को संविधान के बारे में रोचक जानकारी दी जानी चाहिए। बच्चों को नागरिक शास्त्रों के पुस्तकों में संविधान की शिक्षा दी जाती है, लेकिन संविधान का एक बाल स्वरूप संस्करण और तैयार करना बच्चों में संविधान के प्रति रुचि और जागरूकता का
प्रसार करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, इसलिए बच्चों के लिए भी बनाना चाहिए। संविधान विशेषज्ञों तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा बाल साहित्य के रचनाकारों के संयुक्त प्रयास से ये कार्य किया जा सकता है। जिस अवस्था में बच्चों की जीवन दृष्टि का विकास हो रहा है, उसी अवस्था में संवैधानिक आदर्शों और कर्तव्यों को आत्मसात करने से एक अच्छे नागरिक का व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। देवियों और स्वजनों, हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणराज्यों का स्रोत है। ये विविधता में एकता का स्रोत है। ये विषमताओं की परिपृष्ठ में स्थापित की गई समता का स्रोत है। ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्रांति का स्रोत है। ये व्यक्ति की गरिमा और हमारी राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने का स्रोत है। ये हमारी बहुस्तरीय एवं बहुआयामी शासन व्यवस्था का स्रोत है। ये निरंतरता के साथ परिवर्तन का स्रोत है। मैं संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपना समय के हिसाब से आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं, नया चीज ले सकते हैं, युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसको बदल सकते हैं। समाज के अनुसार, संविधान के अनुसार राज्यों को ये सुनिश्चित करना है कि हमारी न्याय व्यवस्था सबको समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सभी हितधारकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि फ्री लीगल एड की सुविधा वंचित वर्गों के लोगों के लिए सुलभ हो तथा अधिक प्रभावी बने। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने गहन विमर्शों के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाया। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों, कर्तव्यों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं का विस्तार से प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार की ये तीनों अंग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पारस्परिक समन्वय के साथ हमारी संवैधानिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाते रहेंगे। समन्वयपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे तथा हमारे देश विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी गति से आगे बढ़ेगा। संवैधानिक समन्वय, संतुलन पर इस दृढ़ आस्था के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। ये आशा करती हूँ आगे जाके हमें आगे बढ़ेंगे और सबको उचित न्याय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।